Now we'll take the number of workers be n. Time taken, that is t. This is also inverse variation. Therefore, n inversely proportional to 1 upon t. Therefore, n is equal to k upon t. Here k is a constant. Okay. Therefore, nt is equal to k. That is the equation of variation. This is the equation of variation. Now, 15 workers can build a wall in 48 hours. Number of workers, here the value of n is 15. Okay. Time is given 48. Now, n is equal to 15 and time is equal to 48. Okay. Now, substitute this n and t. Therefore, nt is equal to k. The value of n is 15. K is equal to 48. Therefore, 48 into 15, you will get k is equal to 720. Is the constant of variation. Okay. Now we have to find the equation of variation. Therefore, nt is equal to 720 is the equation of variation. Now, second question, how many workers will be required to do the same work in 30 hours? इसका मतलब 30 hours में फाइंड आउट करना है हमने. लेकिन t का वैल्यू दिया, सब्स्टिट्यूट t is equal to 30. Same formula write down, nt is equal to k. n is not given, t is given 30. The value of k is 720. Therefore, n is equal to 720 upon 30. Therefore, the value of n is equal to 24. So, how many workers will be needed? Therefore, 24 workers will be required. Now, we'll go to third sum. See the third sum here. 120 bags of half-liter milk can be filled by a machine within 3 minutes. Find the time to fill such 1800 bags. एक क्वेश्चन का मतलब देखो, हाफ लीटर मिल्क का 120 बैग्स है. वो बैग्स को फिल करने के लिए एक मशीन को 3 मिनट्स लगता है. ठीक है. हाफ लीटर मिल्क का 120 बैग्स मशीन विल टेक 3 मिनट्स. अभी इधर हमारे पास बैग्स कितना है? 1800 बैग्स है. सेम हाफ लीटर फिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा? सो बैग्स आर लेस, टाइम इज आल्सो लेस. बैग्स आर मोर, time is also more. That is why this is direct variation. Okay. Now we'll take number of bags. Will take number of bags. Will take n and time. Time will take t. This is direct variation. This is write down direct variation. Therefore, n is directly proportional to t, or n is equal to kt. Here k is a constant. Okay. Therefore, n upon t is equal to k is the इक्वेशन ऑफ वेरिएशन. अभी हम लोगों को क्या इंफॉर्मेशन दिया इधर? 120 बैग्स दिया, टाइम दिया 3 मिनट. ठीक है. देयरफॉर बैग का अल्फ़ाबेट क्या है? n. n इज इक्वल टू 120.
and time is given 3 minutes. Therefore n upon t is equal to k. n का वैल्यू 120 and t का वैल्यू 3. Therefore 3 ones are 3 fours are. So what is the value of k? K is equal to 40. Therefore k is equal to 40 is the constant variation. Constant of variation. Okay. Now अभी हम लोगों को फिर क्या फाइंड आउट करने का, अभी इक्वेशन ऑफ वेरिएशन करना. ठीक है. n अपॉन t इज इक्वल टू k मीन्स n अपॉन t इज इक्वल टू 40 इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग. सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया? फाइंड द टाइम टू फिल सच 1800 बैग्स. बैग्स विल be to n, right? Therefore n, the value of n is 1800. Second step, you have to find out substitute n is equal to 1800. Therefore n upon t is equal to k. n का value 1800, time is not given, that is 40. हो गया. अभी मेरे को t का वैल्यू चाहिए, तो तुम लोग क्या करो, 40 into t करो इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1800. द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 1800 अपॉन 40. देन this 0 and this 0 cut. Therefore 4 ones are 4 fours are 16, 4 fives are. The value of t is equal to 45. Therefore 45 minutes to fill 1800 bags. So 120 बैग्स को 3 मिनट्स लगा, तो 1800 बैग्स को कितना मिनट लगता है? 45 मिनट्स लगेगा.